जय भीम भैया, जय भीम राठौर भैया, जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम। कैसे हो आप?
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? कैसे हो रवि भैया? हैप्पी बर्थडे भैया। कैसे हो? थैंक यू सो मच डियर दीदी जी। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। आज तो पार्टी बनती है। बताओ। कम से कम आज तो कुछ खर्चा कर लो। मस्त हूँ दीदी जी। ओके भाई, मस्ती रहना चाहिए। ड्यूटी हो आज भी कि रूम पर? अच्छा, मैं खाती हूँ पहले ये बताओ। आप जो खिला रहे हो मैं खाती हूँ? सच में दे दीजिए। बताओ, मैं खाती हूँ? आप बताओ, सच्ची बताओ पहले। आप लोग समझ गए हो कि मैं जो चीज नहीं खाऊंगी वही चीज बताओगे। खर्चे से बचने का उपाय अच्छा तरीका है। सही है ना भाई? आज तो खाना पड़ेगा ना, मेरा बर्थडे है तो मैं जो खिलाऊंगा वह तो खाना ही पड़ेगा आपको दीदी जी। अरे नहीं भाई, ऐसा मत जान निकल जाएगी, कोई बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है भाई, कभी नहीं खाएंगे। कुछ दूसरा खिला दोगे, खा लेंगे। और बताइए, भाभी कैसी हैं? क्यों, भाई के लिए नहीं खा सकती हो आप? बिल्कुल खा सकते हैं भाई, बट ये नहीं खा सकते हैं सच्ची। हमारे से ये चीज नहीं होगा। बाकी कुछ भी खा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? भाभी नहीं, मानसी बोला करो दीदी आप। नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कभी नहीं संभव है। ऐसा नहीं है। हमारे भाई हमसे छोटे हैं दो। एक तो चले गए, ये कभी हैं हमसे छोटे जो। हमने आज तक कभी भी उनकी बीवी का नाम नहीं लेके बोला, कभी भी नहीं। छोटी भाभी। भाइयों को नाम ले लेंगे चलेगा कुछ देरी तक, पर भाभीियों का नहीं। थैंक यू सोनू सर आपको, रवि भैया जी की तरफ से। कभी नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा भैया। जय भीम रवि भैया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा रवि भैया, ये बताना सबसे पहले सेलिब्रेट कौन किया था आपको? थैंक यू सर जी। सबसे पहले सेलिब्रेट कौन किया था आपको? वीर भैया जी या साधना दीदी? वीर भैया जी तो 12 बजने का इंतजार कर रहे थे मेरे लाइव मेरा।
आज जाओ, पार्टी दे रहा हूँ सोनू सर। सोनू भैया, रवि भैया पार्टी दे रहे हैं, जाओ। सबसे पहले आप और वीर जी का साथ मैसेज आया था, दीदी का विश सुबह किया था। अच्छा, तभी तो वीर भैया जी बोल रहे थे। कंचन सिस्टर देख लेना, ये कोई बात नहीं हुई। साधना दीदी ने पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पर भी। पहले अब करके सो गई। ये कोई थोड़ी होता है कि सो जाओ करके। क्या 1 महीने पहले कर दो, ऐसे तो होता है। देख लेना, वो भूल जाएंगी। शर्त लगाए थे मेरे से। मैंने कहा अच्छा। कह रहे हैं देख लेना, जीत मेरी होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। रात में वो जग रहे थे, मेरे लाइव में ही थे। कह रहे थे अभी मत बंद करो, 12 बजे तक का चलाओ, जब तक जग रहे हैं। ऐसे करती हैं साधना दीदी जी, अच्छा। हाँ, सेलिब्रेट कर दिया, आराम से सो गई। कोई बात नहीं भैया, भाई बहनों का ऐसे प्यार बना रहा हमेशा। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, यही तो है, और क्या है। तब तो आज ड्यूटी का ऑफ है भैया आपका। हाँ, वीर भैया जी बोल रहे थे सिस्टर बताओ फोन करना। मैंने कहा भैया इतनी टाइम में फोन नहीं करूंगी, आप कर लेना। कह रहे थे ठीक है मैं कर लूंगा फोन। वो कह रहे थे सबसे पहले फोन करूंगा। मैंने कहा अच्छा। हमको तो पता ही नहीं था, साधना सिस्टर का स्टोरी देखा था। 11 बजे। अच्छा। यस दीदी जी। ओके भैया। सुभाष बड़े भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय। स्वागत है भैया आपका, कैसे हो आप? कैसे हो सुभाष भैया? लाइक डन, ओके थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हो आप? नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते जी, जय भीम नमो बुद्धाय भैया। क्या हाल चाल है बहन जी? बिल्कुल बढ़िया है भैया, आप बताओ आपका क्या हाल चाल है? अब पता हो गया ना सोनू भैया, आज तो आ जाओ। आप टाइम से पार्टी में शामिल हो जाओ। ये कोई बात नहीं हुई रवि भैया। सुबह तो सोनू भैया को आपने इनवाइट ही नहीं किया। मैं इसके विरोध रहूंगी, क्योंकि दूसरे के लाइव में आए हैं, आप वहां इनवाइट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है रवि भैया जी। आपने मुझको भी नहीं बताया था, मुझे तो वीर भैया जी ने बताए थे। ऐसा थोड़ी किसी को इनवाइट किया जाता है। आप बताओ, यहाँ आपकी गलती है कि नहीं? ऐसे तो जब कुछ ऐसे होगा कार्यक्रम, जब जो चीज सामने हो जाएगी तब बोलोगे आओ अब। ऐसे कैसे कोई पहुंच पाएगा, बताओ। मैंने सबको बताया था 25 तारीख को मेरा बर्थडे, पर मुझसे नहीं बताए थे आप। मुझसे कब बताए, बताओ। हम भी बढ़िया हैं जी, आ जाओ चाय पीने आए हैं बहन। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया जी, चाय पी लीजिए। हमारा ड्यूटी चालू है। अच्छा भैया। जय भीम भैया, जय भीम जय भीम।
और सुनाइए कैसा चल रहा बहन जी? सब बढ़िया भैया, एक एक दिन जो बीत जाए अच्छा है। इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आपके घर परिवार में सब ठीक है? सब ठीक है भैया, आप सुनाइए, आपके फैमिली में सब लोग कैसे हैं? थैंक यू बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। क्या दीदी जी, क्या बोला? हमने सुना नहीं। हमको नहीं बताए थे भैया, सच में मुझे नहीं पता था, मुझे तो वीर भैया जी बताए थे। आप किसको कब इनवाइट किए थे बताओ? कि 25 तारीख को बर्थडे है, मुझको नहीं पता है। हाँ सही बात बोल रही हैं आप बहन जी। ओके भैया, थैंक यू। मुझे वीर भैया जी 2 दिन पहले बताए थे। मुझे कल फिर बोल रहे थे, मैंने कहा भैया मुझे याद है, तब इसीलिए शर्त रखे देख लेना सिस्टर, आपको तो याद है पर साधना दीदी को नहीं याद रहेगा। मैंने कहा अच्छा। थैंक यू बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी जी, हमने दीदी की तरफ से भी कई बार बताया था और आप वहाँ पर थी, क्या बोलते हो विपिन दीदी की लाइव में, वहाँ पर भी मैंने बताया था आपको। अच्छा, मुझे ही नहीं याद है, मैंने शायद उस चीज को गौर नहीं किया रवि भैया, मेरे हिसाब से यही है। पार्क से आ गए बेटा? अच्छा, बड़े जल्दी आ गए, बड़े जल्दी आ गए। क्यों? थैंक यू सुभाष भैया। लगता आज कोई बड़ी पार्टी होने वाला है। हाँ सुभाष भैया, रवि भैया का आज बर्थडे है, इसलिए पार्टी चल रही है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय भाई, स्वागत आपका, कैसे हो आप? आपका तबीयत कैसा है दीदी? मेरा तबीयत ठीक है भाई, आप बताओ आप कैसे हो? रवि भाई नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते जी सुभाष भैया जी की तरफ से, क्या हाल चाल है? रवि भैया आज पार्टी में लगे हुए हैं, मेहमानों की खातिरदारी कर रहे हैं। आपका खाना पीना हो गया है दीदी? नहीं भाई, अभी कहाँ, अब जा रही हूँ किचन में, किचन से कहाँ छुट्टी है भाई। मैं भी ठीक हूँ दीदी, ओके भाई, थैंक यू, ठीक ही रहना चाहिए। रवि भाई आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो हमारे सुभाष भैया जी की तरफ से रवि भैया आपको। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका हुआ चाय वो कुछ पिए? हैप्पी बर्थडे जी रवि भैया जी। रवि भैया गए लग रहा है, हम लोग चिल्ला रहे हैं। थैंक यू सुभाष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, रवि भैया अपना निकल लिए पतली गली पकड़ के। तभी तो सोनू भैया हंस रहे हैं। जय भीम भैया, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। कैसी हो? कैसी हो सिस्टर?
मैं ब्रदर हूँ। अच्छा, इसी आईडी से सुबह सिस्टर भी आई थी। ओके भाई, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कैसे हो आप? मम्मी मम्मी कैसी हैं सब लोग? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। खा लो, खट्टा होता है। लोगे? अरे ये गोले वाले हैं। सब बढ़िया भैया, आप सुनाइए सुभाष भैया। हमसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं मेरे भैया, आपसे नाराज क्यों रहूंगी बताओ? आपसे क्यों नाराज रहूंगी भैया? सभी सम्मानित साथियों के हमारे तरफ से क्रांतिकारी मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक बधाई। सेम टू यू भाई, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय पीकर जा रहे हैं मशीन पर। ओके भैया, आप काम करना, कमेंट नहीं करना क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। कौन सी मशीन चलाते हो बड़े भैया जी? किस चीज की मशीन है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। पत्ता सुखाने वाली मशीन, अच्छा भैया। ड्रायर मशीन, समझ गए भैया। जिनसे प्लाईवुड बनता है,
अच्छा भैया। प्लाईवुड बनता है, कोट के जैसा होता है। कच्चे पेड़ से कट कर पत्ता बनता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देख लेना। क्या आपके चैनल पे ही हूँ भैया, ढूंढ रही हूँ वीडियो कौन सी है। समझ में आ जाएगा बहन। हाँ मैंने देख लिया भैया आपका वीडियो, यही ना। थैंक्स भैया। बहुत मेहनत का काम होता है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। अंजू कुमारी, जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम। दीदी जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम। सिस्टर आपको भी। और बताइए कैसे हो दीदी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, आप बताओ आप कैसे हो? थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। सभी यूट्यूब फैमिली को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम। मैं भी ठीक हूँ दीदी। ओके सिस्टर, ठीक ही रहना चाहिए। और बताइए मम्मी आपकी कैसी हैं? थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच।
दीदी बहुत ठंड लग रहा है। ठंडा मौसम है बहन ना, ठंड लगेगा ही, मुझे भी बहुत ठंड लग रहा है। भाई आप कहाँ हो? छुपो मत मेरी नजरों से भाई। क्यों बहन, आपकी नजर से क्यों छुपेंगे? कोई गलती की है क्या आपके नजर से छुपेंगे, बताओ? छुपता तो है जो गलत करता है। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। ओके दीदी, ओके बहन, थैंक्स। जाओ आप अपना ख्याल रखना। सेम टू यू सिस्टर, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय बहन, बाय बाय। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच।
बाय बाय भैया, बाय बाय। अपना ख्याल रखना सुभाष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज नहीं आ रहा, अभी आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ पहले। हाँ, अब आ रहा है, अब आ रही है। अच्छा, अब तक म्यूट था। भूल जाते हैं, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। बताओ, खाना वाना हुआ आपका? खाना पीना हुआ? ये अनुराग कौन है जीजी? हमारा बेटा है। बोलो। अच्छा, गुड, थैंक्स भाई। और बताओ। मैं ठीक हूँ, आप बताओ जीजी। मैं तो नहीं ठीक हूँ भाई, क्या बताऊँ। मैं तो नहीं ठीक हूँ भाई। अच्छा, आज मेरा मूड ऑफ है, घर में गेस्ट आ रहे हैं, आए हैं, इसलिए इसलिए मूड ऑफ है। अच्छा, मूड ऑफ होता है भाई और खुशियां होती है, बताओ कैसे हो? पहली बार सुना है। घर में कोई आए तो उसके लिए मूड ऑफ हो जाता है। कौन आया घर में बताओ? घर में कौन आया है? मुझे परेशानी होती है। चार्जर लाया ऊपर से, मोबाइल कहाँ रखा? अच्छा, चार्ज हो गया था। इतनी ज्यादा परेशान है? वो देखे कहाँ से, तुझे तो गेम खेलना था तो तब तो हम लोगों को भी झूठे नहीं पूछोगे क्या हो? अब तो समझ गए हम। अब बुलाओगे तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर ही मन से फिर बोलोगे, आने के बाद तब यही कहोगे ना। अच्छा, बुआ और बुआ की लड़की, इतनी नफरत है क्या? अरे नहीं जीजी, नहीं नहीं भाई, अब तो समझ गए। अब सबकी चाल सब समझ में आ गए। वेलकम उसी का करोगे जो संभव नहीं रहेगा, वो तो मुझे भी पता है। ऑलवेज। अच्छा, वेलकम उसी का करोगे जो संभव नहीं रहेगा। 6 नंबर लाइक कर दिया सिस्टर। ओके बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हो? जय भीम, जय भीम, जय भीम सिस्टर। यकीन करो। कैसे यकीन करूं भाई? मुझे तो आज यकीन नहीं हो रहा है। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय 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 भीम। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हमें तो आज विश्वास नहीं हो रहा भाई। ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि भाई भी ऐसे हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आराम से खाओ। आज कौन सी डे है?
अरे नहीं, मेरी माँ की चुगली करने वाली को मैं कभी वेलकम नहीं करता। अच्छा, कोई बात नहीं है भाई, वो तो ननद भौजाई में सब में चलता है। ननद भाभी का मैटर वो लोग सुलझेंगी अपना। आप तो भतीजे हो, आपको ये सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। स्वागत करना चाहिए। कोई रोज थोड़ी आएगा आपके घर, बताओ। होता है समय समय का। आपका वेलकम रहेगा मेरे घर में। ओके भाई, पता नहीं वो कौन जानता है, दिल से बोल रहे हो कि ऊपरी मन से सिर्फ। बताओ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फूल कुमारी बहन, थैंक यू सो मच। आराम से खाओ बेटा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए भाई, बिना बताए बोलो। हम तो सोचे चले गए गुस्सा होके। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय। मैं तो यही हूँ। अच्छा, हम तो सोचे चले गए। जब आपकी शादी होगी, जब आपकी शादी होगी ना तब आएंगे। बोलो। कब अपनी शादी कर रहे हो? इससे पहले थोड़ी आऊंगी भाई खर्चा करने, क्योंकि तब खर्चा करूंगी तो लूंगी भी आपसे ना, इसलिए आऊंगी। बताओ। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा तो हम लोग आएंगे भी नहीं। तब हम लोग क्या करने आएंगे जब अपनी शादी नहीं करोगे तो? वो तो एक खुशी का माहौल होता है, उसी में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसका मतलब आप पहले से शादीशुदा हो इसलिए शादी नहीं करोगे? नहीं नहीं, अभी शादी नहीं। अच्छा, चाहे जब करोगे तभी आएंगे। 4 साल, 10 साल, 20 साल जिंदा रहे तभी आएंगे। शादी करूंगा तो बहुत जिम्मेदारी होगी, तो जिम्मेदारी को मतलब शादी नहीं करोगे का? ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप ही के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। हम्म। शादी कभी नहीं करूंगा।
इसका मतलब आप शादीशुदा हो, झूठ बोलते हो बहनों से। नहीं जीजी, शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, अभी 17 साल है मेरा। अच्छा, झूठ तो नहीं बोलते हो? शादी वाली बात से मुझे नफरत है। वो तो वक्त बता देता है भाई, कितनी नफरत होती है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप नहीं थे तो पूजा सिस्टर भी चली गई। समझे कुछ? क्या समझू भाई, क्या समझू बताओ? कितने भाई तो डर की वजह से छोटे बन जाते हैं। आप डर की वजह से शादी नहीं करोगे, बताओ? अरे ऐसी बात नहीं है भाई, बहनें इतना ज्यादा वो नहीं है कि आपका घर और सब लूट लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं छोटा ही हूँ। अच्छा, छोटा हूँ। अरे आराम से खाओ, क्यों इतना बर्तन बजा रही हो? जी जी ठीक है, आप मेरे शादी में आना, ओके। अच्छा। अब तक तो शादी नहीं करने वाले थे। फोल्ड कर दो। नहीं, ये पे तो लग गई बंदी। ये देखो ना, ये वाली हाथ लाइक है। अब तक तो आप शादी नहीं करने वाले थे। क्या? हाँ, ये कहो तो बात आपकी बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट भाई। पहले मैं एक सरकारी नौकरी कर लेने दो, फिर शादी कर लूंगा अपनी जान से। अच्छा भाई, ओके, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल भाई। पूरा काट दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
गुणवंत भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या हुआ है भाई, बताओ क्या हुआ है? अब तक तो आप शादी नहीं करने वाले थे, अब आपकी जान प्राण सब लोग आ गए। बताओ क्या हुआ है? मुझे क्या हो सकता है? आप ही तो बोल रहे हो दुआ करना। हम तो हमेशा दुआ करेंगे। जुबान से बयां करना सब आसान लगता है भाई, पर हकीकत कुछ और ही होती है। अच्छा, भगवान बुद्ध से कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे भाई, बिल्कुल दिल से करेंगे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय भाई। हाँ बोला है तो कर देना दिल से दुआ लॉर्ड बुद्धा से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। दिल से दुआ करेंगे हमारे भाई और हमारी भाभी जहाँ रहे हमेशा सही सलामत रहें। जय भीम, जय भीम, जय भीम भाई। थैंक यू सो मच। जय भीम भाई, जय भीम। अगर देखो किसी और स्टाइल से निकलना है ना तो इसमें से चूज करो। इसमें हिंदी में से भी चूज कर ले, या तो कुछ इनमें से, जैसे कि इस राइटिंग में लिख, अगर इसमें लिख। जय भीम भाई, जय भीम। अरे नहीं भाई, हम ऐसा थोड़ी हैं, किसी को नहीं बताएंगे, इस बहन पे विश्वास रखो। हमें क्या मिलेगा ऐसे झूठे? पता नहीं आप मजाक में कर रहे हो या हंसी क्या है, हम ऐसे थोड़ी दूसरे से कह देंगे भाई। नहीं भाई, नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं कहेंगे, आप किसी के लाइन में सुन लेना तब बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भाई, ऐसा नहीं है। थैंक यू किस बात का? मैंने देखा, मैंने इस लाइन पे भेजा। ठीक है। कोई और लाइन मुझे
खाना पीना हुआ कुछ? आपका खाना पीना हो गया? नहीं हुआ भाई, जा रही हूँ किचन में रोटी बनाने। क्या क्या खाएं आज? दाल चावल रोटी। हरी मटर की दाल। हरी मटर की दाल को गांव में क्या बोलते हैं बताओ? अगर हरी मटर की दाल गांव में बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हरी मटर की दाल, हाँ, छिलके वाली हरी मटर। पहली बार नाम सुन। यूट्यूब पे सर्च कर लेना भाई, पहली बार क्या, सारी वीडियो निकल के आ जाएगी। खाए नहीं हो क्या अभी तक? हम्म। चना का दाल होता नहीं भाई, छिलके वाली जो हरी मटर होती है ना उसकी भी दाल बनती है, जिसको गांव में बोलते हैं निमोना। ये तो समझ। हर एक जिले में अलग अलग होता होगा, नाम नहीं बता सकती, पर हरी मटर की दाल बनती है। मूंग की दाल, अरे नहीं भाई, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मूंग की दाल होती है, लाल मलका होता है, चना होता है, ये सब तो होता है। मेरी तो सर्दियों में देखोगे ज्यादातर लोग खाते, ये सीजन की होती है, इसके बाद कहाँ लोग खाते हैं। अरहर की दाल होती है, लहार क्या होता है? कुर्ती की दाल। हाँ तो मजाक ले लिए, अपनी मम्मी से पूछना होती है कि नहीं। लहार की दाल होती है, अच्छा क्या होता है, हमारे इधर नहीं पाया जाता है। यूं। क्या लिख रही बेटे? मैं लिख रहा हूँ सबको मेरी क्रिसमस। आज मेरी क्रिसमस है ना। अच्छा, आपकी किचन है। मेरा गिफ्ट दे देना अभी। काम कर लो बेटा, जाओ अपना फोन रख दो, मेरी फोन रख दो, फोन रखो। 6 बज गए, पापा ट्यूशन जाएंगे। जाएंगे, फोन रखो, काम कर लो अपना। तो कौन सी भाषा में लिखूं? चाइनीज? कोई भाषा नहीं, अपना काम करो बस। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, आप बोलो। थोड़ा सा चला गया था, कहाँ चले गए थे? आप बोलो जी जी, मैं बोल रही हूँ भाई, आप बोलो। क्या टाइप कर रही है बेटा, रख दो फोन, गलत बात है, काम करो अपना, फोन रख दो, ऐसा नहीं करते, रख दो। दो में अपना काम करो, चलो जाओ।
बच्चे को ज्यादा मोबाइल मत देना। नहीं देती हूँ भाई, छोटी वाली थी। विकास भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम आपका हमारी लाइव में। कैसे हो भैया? थैंक यू बड़े भैया जी, कैसे हो आप? अरे भैया, भोजपुरी लिखो या इंग्लिश या हिंदी। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? जय भीम जय भीम जय भीम भाई। विकास भैया, हिंदी लिखो। बुझलू। हंसाओगे क्या भैया इतना? बुझलू कहाँ है? केसन बाड़ू हो? हम बढ़िया हैं भैया, आप बताओ आप कैसे हो? समर भाई, भाषा को समझ में आए बताना, क्या हुआ? गांव की भाषा को समझ में आए? क्या हुआ जीजी? कुछ नहीं भाई। विकास भैया, गांव की एकदम भोजपुरी बुझलू, समझ में आए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हो आप? विकास भैया बोलो, कैसे हो? अच्छा, आपको भी लग रहा भाई समझ में आ रही है ना? मुझे ज्यादा भोजपुरी नहीं आती है, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। आप तो हमको हंसा ही दिए। मैं तो कट्टर देहाती हूँ। अच्छा, कट्टर देहाती हो तो बोले काहे नहीं? तब कैसे कह रहे हो हमको नहीं पता है छिलके वाली मटर की दाल क्या होती है? हमने तो पहली बार नाम सुना। कोई गलत बात हो तो अरे नहीं मेरे भैया, ऐसी बात नहीं है बड़े भैया जी, गलत नहीं है। मुझे हंसी आ गई आपकी बात पे। गांव में लोग ऐसे बोलते हैं ना, बुझलू। है बहनी, है बतिया समझ लो। माफ किया, अच्छा। समर भाई माफ कर दिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताओ आप कैसे हो?
जी जी, कोहरा सुबह में होता है। हाँ भाई, सुबह में नहीं, शाम को भी होता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी जब मौसम नहीं खुलता देखते नहीं हो, दिन में भी होता है। सर्दियों में कोहरा का कुछ कहा नहीं जाता है। जैसी भोजपुरी आती है वैसे बोले हम। बुझलू का मतलब मुझे भी मालूम नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ बुझलू का मतलब बोलते हैं कि समझिए इस बात को। इधर आज 10:45 तक रहा है। अच्छा भैया, हमारे यहाँ तो दिल्ली में मौसम खुला है। आज कल भी धूप थी, आज भी धूप है, लेकिन है ना, हवा बहुत तेज चल रही है। अच्छा, लाइक डन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक्स। हमका नहीं खे पता बाबू, सब पता है भैया आपके। जेके पता ना रहे वो बोलबे ना करो ऐसे। 12 लाइक हो गए। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से हो भैया, विकास भैया बताना। नहीं के बा, अच्छा, कहाँ से हो विकास भैया ये बताओ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, मेरी प्यारी जीजी के लाइफ में सबका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ये महाराष्ट्र में भाषा थोड़ी सी है चेंजिंग, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मिलता है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मेरी भाषा मराठी है। हमें मराठी तो बिल्कुल भी नहीं आती भैया। शीला दीदी भी महाराष्ट्र से हैं। हाँ, शीला दीदी भी महाराष्ट्र से हैं, लेकिन उनको बिल्कुल हिंदी बहुत अच्छी आती है, परफेक्ट एकदम। शीला दीदी को एकदम हिंदी परफेक्ट आती है। उनके लाइव में सब मराठी बोलते हैं, लेकिन दीदी तो पूरी हिंदी समझती हैं, हिंदी लिखती भी हैं। हमारे लाइव में 2-3 बार आई थी तो हिंदी में ही लिखती थी। आप भी तो समझते हो भाई मराठी भाषा। दीदी के लाइव में मैं आपको देखती थी। हिंदी तो मुझे भी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। हाँ, उनको हिंदी और मराठी दोनों आती है। इंग्लिश भी तो आती है। इंग्लिश में सिर्फ 0 हम ही हैं। उनको हिंदी भी आती है, मेरे से हिंदी में बातचीत करते हैं। मैं भोजपुरी बोलने की कोशिश कर रहा था। आपको आती भी है भैया। जिसको नहीं आएगी वो बोलने की कोशिश कैसे करेगा बताओ। अभी वो लाइव में है। अच्छा, दीदी की भी लाइव चल रही है।
मैं बहुत दिन से नहीं जा पा रहा हूँ उनके लाइव में। चले जाओ ना 10 मिनट के लिए। अच्छा जी, बिल्कुल भैया। विकास भैया बताओ ना, जिसको नहीं आएगी कैसे कोशिश कर लेगा? आपको तो थोड़ा बहुत आता जरूर होगा तभी ना। जिसको नहीं आएगा ना वो सोचेगा हम क्या लिख रहे हैं, पता न हमसे गलती हो गई, किसी को गलत लग गया या क्या, वो पहले सोचेगा। नहीं जाऊंगा, गुस्सा हूं उनसे। क्यों भाई, क्यों गुस्सा हो बताओ? लिखना कम आता है पर भोजपुरी समझ लेता हूँ मैं। अच्छा, भोजपुरी समझ लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने मुझे ज्वाइन किया है क्या? मेरे वीडियो पर कमेंट थी आपकी। हाँ, मैंने आपको ज्वाइन किया था आज ही। मैं ऐसे वीडियो देख रही थी ना, आपकी वीडियो आई थी, मैंने भी देखा क्या ये भी अपडेट करवा दिए हैं भैया, तो मैंने आपको ज्वाइन भी कर लिया और कमेंट भी कर दिया था। लेकिन मुझे तो बहुत प्यार करती हैं, जब मैं उनके लाइव में जाता हूँ बहुत खुश हो जाती हैं। तो फिर कैसे गुस्से हो बताओ? जय भीम कंचन जी, जय भीम भैया, जय भीम। मोस्ट वेलकम आपका हमारी लाइव में। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ, मुझे समर बेटा बोलता हो। हाँ, समर बेटा बोलती हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। मैं जा रहा हूँ उनकी लाइव में। ओके भाई, ओके जाओ। बाय भाई, बाय बाय। जाओ। आपको भी ज्वाइन किया। ओके भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सॉरी, आज आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं है समर भाई। मैं ये नहीं बोलती हूँ हमी को टाइम दो, मैं तो ये बोलती हूँ जितने भाई हैं हमारे समाज की, जितने बहनें हैं, सबको सपोर्ट करें। मैं इसके लिए कभी एतराज नहीं करती हूँ किसी से। मैं खुशी से बोलती हूँ भाई। अच्छे भाइयों की सभी बहनों की आवश्यकता होती है। सब लोग सोचते हैं हमारे भाई अच्छे हों, तो सबको आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय भाई, बाय बाय।
दीदी आपके पीछे बाबा साहब हैं, कहाँ की फोटो है? भैया मैंने ये ना पिक्चर ली थी उससे, गूगल से। अच्छा। और बताइए भैया, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं? जितनी बड़ी बड़ा जय भीम सोनू भैया, जय भीम। नमो मिठाई, थैंक यू। अरे भैया उनको मत बुलाओ, छिपकली उपकली अपना काम कर रही है। अभी अलार्म बज रहा है, अलार्म चालू है। हम तो परेशान हो जाते हैं अलार्म से।
वो फोन में आपको देखती ही रहती हैं, आए कि नहीं आए, पूछती रहती हैं मम्मी आए कि नहीं आए। रूही सिंह, स्वागत है दीदी आपका, कैसी हो आप? कैसी हो दीदी आप? जय भीम सोनू भाई, जय भीम। थैंक यू सो मच। प्रकाश, हाँ वो रोटी वाला फोन लेके आना, ले आऊंगा।
पंकज कुमार, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। पंकज भैया स्वागत आपका हमारे लाइव में, कैसे हो आप? जय भीम पंकज भैया।
एक आकाश फोन लेके आए, सब लेके आए, उनके काम को भी जा रहे हैं। लो मम्मी, नहीं ये सिंपल वाला है। नहीं हाँ भैया, हाँ भैया, नया चटनी वाला है। अच्छा है। आराम से दौड़ो मत। पानी गिर गया क्या? पापा जा रहे हैं ना ड्यूटी, फोन दे दो उनका। अरे तुम लोग फोन यूज करते हैं क्या चीज?
जब फोन यूज करते तो चार्ज में क्यों नहीं लगाते? इसको चार्ज नहीं करना है। फोन कैसे है? सिर्फ फोन में लगा 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 देख देगा, लास्ट में जब छोड़ कर
गुड इवनिंग ज्योति दीदी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी लाइफ में। कैसी हो दीदी? क्या बात हुई? जय हिंद सिस्टर, सेम टू यू दीदी। कैसी हो आप? कैसी हो दीदी? कैप लगा लो, ये ले जाओ आराम से। खाना पीना हुआ आपका? ठीक है, ओके दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। खाना पीना की तैयारी हो रही है कि नहीं अभी? खाना बना रहे हैं सिस्टर। अच्छा दीदी, खाना बन रहा है। बना लीजिए खाना, हम तो अभी किचन में से बना के आए हैं। अभी मेरा खाना आए। ऐसे मारोगे ताकि गिर जाए फोन। अभी मेरा खाना आएंगे तब बनेगा। हस्बैंड जी कल आपकी लाइव देखकर कह रहे हैं खुश रहो। अच्छा दीदी, हम तो सोचे आपको कुछ बोलेंगे। हमें भी अच्छा लगा बात करके कल। वहां से ऑन करो। ऑन करो वहां से। सुबह कपड़े धो रही थी इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात नहीं है दीदी, काम सबको होता है। हम भी काम करते रहते हैं, हर एक चीज सबको काम होता है दीदी।
बाद में रात में सोते मैं कहने लगी मैं भी वीडियो में बनाऊं, कह रहे नहीं। अच्छा, परमिशन नहीं है, जाने दो दीदी, जब उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते हैं। सोशल मीडिया उतनी अच्छी नहीं है दीदी, आपकी बात समझ सकते हैं, आप अकेली हैं, बोर हो जाती हैं, पर सोशल मीडिया अच्छी नहीं है। शौकिता की बात सुननी पड़ती है यहाँ। आप नहीं पढ़ाई करो, दरवाजा बंद कर दो बस। हम्म, बहुत खड़ूस है। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, खड़ूस नहीं है, प्यार करते हैं आपसे, खड़ूस थोड़ी हैं, कोई नहीं चाहता। उनके कहने का मतलब उनका सही विचार है, ऐसी बात नहीं है, जब किसी चीज की कमी नहीं है तो सोशल मीडिया पे क्यों आओ। जितनी आवश्यकता सब पूरी हो रही तो फिर आने की क्या आवश्यकता है दीदी, सही बात उनकी है। लेकिन दीदी अकेले दिन भर अच्छा नहीं लगता, मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, बिल्कुल राइट है। ये समझो ना, अभी आपने ये दुनिया नहीं देखी है, आप बोर हो रही हैं ना, जब सोशल मीडिया आ जाएंगे ना तो आप सोचेंगे ना इससे अच्छा अकेले की जिंदगी थी, क्योंकि हम हैं, हमको पता है, क्योंकि जो अच्छे होते हैं दिल के ना, उनको बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, आपको पता है। जो जितने विचार के वैसे होते हैं ना तो सुन लेते हैं, हाँ में हाँ मिला लेती हैं, सबकी सुन लेती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सुनना नहीं पसंद करता है ना, उसको बहुत कठिनाइयों के रास्तों से गुजरना पड़ता है। सिर दर्दी है, डिप्रेशन में कभी कभी इंसान आ जाता है, बहुत धमकियां भी मिलने लग जाती हैं, समझिए आप। इससे अच्छा है ना कि आप जहाँ हो खुश हो, ऐसे मन हल्का कर लेना, एक दूसरे को ऐसे देखकर, जिसको आपको अच्छा लगे कि नहीं हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, ये अच्छे विचार हैं, वहाँ आप अपनी टाइम पास कर सकती हैं, बट नहीं। आज आपका खाना लगता है दीदी हो गया। हाँ दीदी, मेरे हस्बैंड ना नाइट ड्यूटी जाते हैं, 6:30 बजे चले जाते हैं, 6:40, तो उनको खाना बना दिया।
जब बच्चे एडवांस में मांगते हैं ना, जब कभी कभी कोई चीज़ ऐसी बन जाती है जो सब्जियां बच्चों को नहीं पसंद होती है, हस्बैंड बोलते हैं हमारे लिए बना दो, बच्चों की नहीं पसंद होती है ना, तो फिर उनको बना के देने के बाद बच्चों के लिए अलग से बनाना पड़ता है। तो इसलिए हस्बैंड चले गए, खाना बन गया, बच्चे खा भी ले हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है ना, वो चले जाते हैं। जी सिस्टर, मैं भी बहुत दिल की साफ हूँ, पता नहीं क्यों यह सब झेलना पड़ता है। अपने जीवन में लोग ताने मारते हैं। मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ दीदी, मैं समझ रही हूँ। सबसे पहले घर वाले ही मारते हैं, बारी को छोड़ो, सबसे पहले घर वाले ही मारना शुरू कर देते हैं। और जब घर वाले करते हैं तो उनका सुनकर बाहर वाले भी करते हैं। पर ये ना गलत बात होती है। सब्र करो, एक दिन देख लेना, इस बहन की बात पे विश्वास करो, दिन आपका आएगा। ताने मारने वाले भी एक दिन आपके पीछे पीछे घूमेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। मेरी भाभी थी ना, उनको 14 साल के बाद बच्चे हुए हैं। उनको लोग बहुत कुछ कहते थे, वो बेचारी रो के रह जाती थी। उन्होंने बहुत सुना, बट उनको घर में कोई नहीं करता था। घर में सब लोग प्यार करते थे, बाहरी लोग बोलते थे। तो समय है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। देर है अंधेर नहीं, समय आपका भी आएगा। सब्र करो बस, सुन लो ऐसे सबकी बातें, मन पे मत लिया करो। जी सिस्टर, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। आप जितने परेशान रहेंगी ना, लोग सामने वाले देखेंगे परेशान में, डिप्रेशन में, उतनी ही सताते हैं। आज के समय में ऐसी कोई वो परेशानियां नहीं है जिसका समाधान नहीं है दीदी, सब कुछ उपलब्ध हो गया है। हमारा विज्ञान बहुत आगे चला गया है। आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, तो समझो सब कुछ है। ऐसा नहीं है, हताश बिल्कुल नहीं होना है। Festivals are about customs and traditions of our family and community. आप एक बार बोलिए भैया को कि मतलब कहीं जाके आपको दिखाएं एक बार, चाहे ऐसी हो जाती है कभी कभी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सोशल मीडिया क्या ही बोले आपको। Religious festivals are celebrated by लोग people कहते हैं तो कभी बच्चों के मुंह नहीं देख पाएगी। दिल अंदर से इतना कमजोर हो जाती हूँ कि मन करता है कि मर जाऊं, इसको देखकर जीती हूँ। या कभी नहीं कुछ बोलते। ऐसे नहीं है दीदी, कहने वाले तो सबको कह देते हैं। कहने वालों की आदत यही होती है, समझे आप में और कहने वालों में बहुत फर्क है। आप ये समझिए इस अस्थाई मन से कि कहने वालों का नेचर, कहने वालों की बातों पे कभी नहीं आना चाहिए। कहने वाले तो आदत हो जाती है। कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी कभी रुकती है? जिसका भौंकने का काम होता है भौंक करके चुप हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं लेना मन में। बोलते हैं, मैं तो देखती हूँ, सुनी भी हूँ बहुत। ऐसे गांव की ऐसी महिलाएं होती हैं, ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं। इस चीज़ को मैं एहसास किया है, क्योंकि मैंने देखा है अपने नज़रों से और सुना कानों से कि लोग क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं। क्रिसमस का डांस जॉइन किया, इसने सिखाया मुझे। मतलब क्या था वो?
हम्म जिंगल बेल दूसरे कमरे में करो। अभी अकेले घर में बैठी हूँ, बस इंतजार करती रहती हूँ इनका बस। जिंदगी है दीदी, कोई को किसी तरीके से दुख है, किसी को किसी तरीके से दुख है, पर कभी कभी ना बहुत हर्ट भी होता है। कभी कभी अच्छे होने की बिना परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत करिए, हमारी बच्ची आपकी भी बच्ची है, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना दीदी। बच्चियों को हम इसलिए नहीं बोलने देते ना, बच्चे को आवाज इसमें आती है ना तो कॉपीराइट आ जाता है मेरे लाइफ में, इसलिए हम उनको मना करती हूँ, ना बोला करो। अभी आपको ऐसे लगाव रखो, देखो आपके पीछे पड़ जाएंगी। मौसी है, एक मौसी, बहुत पीछे पड़ जाएंगी दीदी, परेशान हो जाओगी। एक भाई ऐसे हैं, उनके पीछे हमेशा पड़ी रहती हैं, को देख लेती है, बोलती है आए कि नहीं, मामू आए कि नहीं लाइव में। मामा भी नहीं आए बेटा। जय भीम, जय बाबा, सब अमर रहे, अमर रहे। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। पंकज कुमार, जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, स्वागत है आपका। सिस्टर जी, बीच में कमेंट गलत हो गया है, कोई बात नहीं है दीदी, हो जाता है, डिलीट नहीं करना। बेटा कल किस चीज का एग्जाम है, कंप्लीट करो उसको बैठ कर।
जी सिस्टर, बिल्कुल दीदी। कौन है? कहाँ कौन दीदी? मेरा बेटा था। बड़ा वाला लड़का था, बैठा था, तो मैं कल एग्जाम है तो उसी के लिए बोल रही थी तैयारी कर लो। नहीं दीदी, मैं इतना जल्दी खाना नहीं खाती। खाना हम 10:30-11 बजे से पहले नहीं खाते, क्योंकि अभी 9 बजे पानी आएगा। हम लोग की आदत हो गई है, पानी उनी भरेंगे उसके बाद। पानी तो खैर लड़का भर लेता है, उसका एक काम होता है पानी भरना। आ रही हूँ सिस्टर। ओके दीदी, कोई बात नहीं है।
आ गई सिस्टर। अच्छा दीदी। बाहर गई थी आप? हम बहनें बात करते हैं तो लोग हंसने वाला लोगों को भेजते हैं। कोई बात नहीं है दीदी। हंसने वाले हंसने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने में क्या क्या बन रहा है आज दीदी? और सब बढ़िया दीदी, आप सुनाओ। खाने में आप क्या बना रही हैं आज? सिस्टर क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बताओ। पूछ रही हूँ खाने में आप क्या बना रही हैं। कुछ नहीं हुआ दीदी, हमें कुछ नहीं हुआ। आप बताओ खाने में क्या बना रही हैं आज? ये वाला? अरे नहीं दीदी, ये ना मेरे बच्चे भेज देते हैं। उनके पास फोन होता है ना, ज्यादातर यही इमोजी भेजते हैं। इसका आप बुरा नहीं मानिए, इससे ना वॉच टाइम बढ़ता है, इस दो इमोजी भेजने से। बच्चे मेरे है ना, फोन रहता है ना बेटे वाला फोन से, क्योंकि मेरे घर में 3 फोन थे बच्चों की। जब लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई थी ना, तो फोन मुझे लेना पड़ा था। तो लड़का जो है ना, वो कभी कभी फोन से काम कर लेता है स्कूल का। तो लड़कियां ली रहती है ना, तो अपने मामा से इसे ऐसे ऐसे भेज के लड़ाई करती हैं लाइव पे। दूसरा कोई नहीं होता है।
मेरी लड़कियां, आज बनाऊंगी मशरूम की सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी। ओके दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, बनाओ। मेरी तो पसंद नहीं है, मशरूम नहीं खाती हूँ। हमारे बच्चे भेजते हैं दीदी, बुरा नहीं मानिएगा। क्या क्या बनाई थी जीजू के लिए? आज मैं उनके लिए सिर्फ रोटी बनाई थी। वो अपने लिए अंडा बनाए थे। मैं नहीं बनाती, ना बनाती हूँ ना खाती हूँ। उनको ऐसी कोई चीज़ बनानी होती है ना, वो खुद बना लेते हैं। मैं नहीं बनाती दीदी, झूठ नहीं बोलूँगी, सच में। मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मैं दूध, दही, घी, अंडा, मांस, मच्छी कुछ भी नहीं खाती। पनीर, मशरूम, कुछ भी। मैं एकदम सबसे हट के हूँ। डांट खाती हूँ बल्कि। कुछ नहीं दीदी, सच्ची। पनीर, मशरूम, दूध, दही, घी कुछ भी नहीं खाती। सच में कुछ नहीं खाती। बाहरी खाना भी कुछ नहीं खाती। बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मैगी, मैक्रोनी कुछ भी नहीं खाती। अपने घर का सिंपल खाना ही बस खाती हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
मशरूम मतलब मीट के बराबर दूध मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद इसलिए बनाती हूँ। ये बात आपकी राइट है। मेरे हस्बैंड को भी फेवरेट है, वो भी बनवाते हैं। बनाने के लिए मशरूम बना देती हूँ बट खाती नहीं हूँ।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बाय बाय, आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय दीदी, गुड नाइट।
जय भीम भाई, कैसे हो आप?
ये काश थैंक यू भैया, थैंक यू। इसकी कहानी
अरे कुछ नहीं बोला इधर तो आप अरे पूछ रहे हो मुझसे अरे मुझे तुझसे कुछ पूछना प्लीज अरे फोन के बारे में कुछ नहीं ऐसा नहीं है, फोन के बारे में ऐसा नहीं है भैया। अभी मैं अपने बात तो सुन ले मुटकी बात तो सुन ले थैंक यू। बम्बू पत्ता बस थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम। काम कर लो, आप भी काम कर लो। हरिंदर कुमार, मेरी बड़ी बहन, जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हो आप? जय भीम सोनू भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भारती भाई। मेरी बड़ी बहन, आप कहाँ से हैं? मैं भैया यूपी आजमगढ़ से हूँ। आप कहाँ से हो हरिंदर भैया? क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। सोनू भैया भारती भाई की तरफ से। आप कैसे हैं सोनू भैया? आपका खाना पीना हो गया है सोनू भैया? आपका तबीयत कैसा दीदी? ठीक है भाई, आप बताओ। आप बताओ भाई। मैं ठीक हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय बहन, मैं बागी बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आजमगढ़ से हूँ, यूपी आजमगढ़ से। और बताइए हरिंदर भैया, घर में सब लोग कैसे हैं? मेरा खाना पीना नहीं हुआ, आपका हो गया कि नहीं? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। मैं ठीक हूँ और मेरा खाना पीना भी हो गया है। अच्छा भारती भाई। जय भीम भाई, जय भीम।
घर में सब परिवार मज़े से हैं। मेरी बहन बड़ी, मैं इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं जॉब करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। दिल्ली कौन से एयरपोर्ट पे जॉब करते हो भैया, बताना। दिल्ली कौन से एयरपोर्ट पर बताना, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। हरिंदर भैया बताओ, दिल्ली कौन से एयरपोर्ट पर काम करते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारती भाई थैंक यू। सोनू भैया जय भीम नमो बुद्धाय। आज बहुत नींद आ रहा है, सो जाओ भाई, नींद आ रहा है तो सो जाओ सोनू भैया। मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जय भीम जय भीम जय भीम भाई। थैंक यू सो मच। दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा हवाई अड्डे पर हूँ। मेरी बड़ी बहन महेंद्र हॉस्पिटल। जय भीम नमो बुद्धाय। दिल्ली इंदिरा हवाई अड्डे पर। अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। थैंक्स भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी बात है भैया, हो सके तो कभी मुलाकात हो भी सकती है। जय भीम जय भीम जय भीम भैया। सोनू भैया जय भीम। थैंक यू भाई। जय भीम भाई। मेरी बड़ी बहन, आप मिशन को आगे बढ़ाते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। दिल की गहराइयों से आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। हम लोग भी यही कोशिश करते हैं, पर बहुत भाई ऐसे हैं जो आके टिप्पणी करते हैं। आप भी दिल्ली में रहती हैं क्या? आप बताइए कहाँ पर, दिल्ली में कहाँ पर रहते हैं? सोशल मीडिया भैया इस पे तो नहीं बता सकते पूरा, पर मैं द्वारका में रहती हूँ। द्वारका में पूरा एड्रेस तो इस पे नहीं बता सकते। अगर आप द्वारका जानते हैं तो समझ जाएंगे। जय भीम भैया जय भीम। सोनू भैया जय भीम। थैंक यू भारती भाई, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? जय भीम नमो बुद्धाय दीदी जी। जय भीम सिस्टर, सीमा सिस्टर्स, मोस्ट वेलकम आपका। कैसी हो आप बहन? लाइक डन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। भारती भाई बोलो कुछ, क्यों नहीं बोल रहे हो? जय भीम भाई। और बताओ कैसी हो दीदी जी? स्वास्थ्य अच्छा नहीं है बहन, जुकाम बुखार से परेशान हूँ।
जय भीम नमो बुद्धाय भैया जी। मैं ठीक हूँ, अपना बताओ। आपके सामने हूँ सिस्टर। खाना पीना हो गया आपका? नहीं बहन, अभी नहीं हुआ। जय भीम सोनू भैया। थैंक यू सिस्टर। मैं बोलना शुरू करूं और तब तक मेरा हॉटस्पॉट बंद हो जाए? ऐसा नहीं है भाई। जय भीम सोनू भैया, जय भीम। नहीं नहीं बहन, कोई ज़रूरी नहीं, आप इतना बता दिया, हम इतना समझ गए। जय भीम नमो बुद्धा, आप मेरी से बड़ी बहन की जैसी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम लोगों को बहुत गर्व फील होता, आप जैसे भाई अगर आते हम लोगों की लाइफ में तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। कुछ रीजन है क्या भारती भाई जो बोलना नहीं? बताओ। जय भीम सोनू भैया, जय भीम नमो बुधाय। फिर कब खाओगी इतनी लेट में? अरे बहन, मैं 11 साढ़े 11 बजे से पहले नहीं खाती, हम लोगों की आदत हो गई है। जय भीम सिस्टर, जय भीम। यदि मेरा रहता तो मैं चुपचाप थोड़ी न रहता। अच्छा भाई। मेरे से ले लो ना हॉटस्पॉट। जय भीम सीमा सिस्टर। यदि मेरा रिचार्ज, अच्छा आप तो बोले दीदी मैं रिचार्ज कराऊंगा ही नहीं, पर मन माना नहीं। हॉटस्पॉट चालू करवा लिए फ्रेंड से अपने, लाइव में एंट्री हो भी गई। बताओ, मन माना आपका? जय भीम सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धा सीमा बहन, जय भीम। मन माना भैया। सोनू भैया बताना। हाँ कल ऑनलाइन क्लास लास्ट। नहीं बेटा कर लेना, कल लास्ट है। और घर में सब लोग ठीक हैं दीदी? जी सब ठीक है बहन, सिर्फ मैं ही नहीं ठीक हूँ, बाकी सब ठीक है। मैं क्या ही दूसरे हॉटस्पॉट्स लेकर उछल कूद करूँ दीदी। अच्छा भाई। दीदी वैसे भी अब बेकार हो गई है भाई। थैंक यू सो मच। क्या हो गया? कैसे? नहीं मेरा रिचार्ज है नहीं, मैं उछल कूद कर रहा हूँ। ऐसा क्यों आप सोचती हो दीदी? सच में भाई एक अपराध हो गया है, लाइव पर अगर किसी से बात कर लो ना, एक अपराध की तरह हो गया है। या तो सोशल मीडिया छोड़ दूं या तो चलाऊं। मैं ये कब बोला कि आप बेकार हो? आप नहीं बोले हो भारती भाई, बहुत ऐसे भाई हैं। उसको रहने दो ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय भीम भैया, जय भीम नमो बुद्धा सीमा सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत लोग तो ये सवाल उठाते हैं ना, बड़े बड़े लोगों का साथ मिल गया है। बाय बाय बहन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगा लो ना, अभी रात में सोते वक्त लगाएंगे। चलो सोने जा रहा हूँ। तो सो जाओ, मैं फिर लगा दूंगी, परेशान मत करो। नहीं लगा लेता हूँ, लाओ दो। लेट जाओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। 9 बजने जा रहे हैं ना, वो मोटर चालू करके पानी भर लो अभी। हाँ थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप भी काम वाम करोगे? हाँ कौन सी डे है? मंगलवार। थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे। हाँ बेटा। आप मंगलवार को गए थे कहाँ? बाजार? मैं कहाँ मंगलवार को गई बेटा, चाची गई थी। नहीं, सब्जी लेने। सब्जी लेने सोमवार को गए थे। सोमवार को कितने? जय भीम सोनू भैया, जय भीम। थैंक यू सो मच। कहाँ चले गए भारती भाई? क्या बेटा, सो जाओ। लगा दिया विक्स, लगा दिया, अपने भी लगा लिया। क्या? दरवाजा पहले बंद करो। दरवाजा बंद करो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। खाना पीना खा लो। खा लेंगे भैया, खाने का मन नहीं हो रहा।
आप कुछ खाना न ले गए वो? छिपकली नहीं है, अलार्म है, अलार्म। छिपकली आज सो गई। छिपकली आज सो गई भाई। अलार्म बैठी है। मैसेज देखते ही फोन ले लिया। मामा क्या पूछ रहे हैं? चल रहा था, अभी कुछ पहले बंद हुआ है। अलार्म तो हमेशा स्टार्ट ही रहते हैं। आपका खाना हुआ? आपका खाना पीना हुआ कि नहीं? एक बात बता, देखो मैं रोज एक ही बात समझाता हूँ, सर्विस तो सही है। अब ये बता यहाँ से आ रहे जा रहे आपकी दी गई था, ये रोज मैं एक ही बात समझाता हूँ कि साफ करो। भाई क्या आपका पूरा बंदी देता है, इसको खोल के लेकर अभी कहाँ? कब खाओगे? तुम्हें चलाया वो बोतल के किलोमीटर चलाया नहीं होगा दिया था मेरा हो गया होगा कार चलाने के विचार प्रमाण ना रहा अच्छा,
आज भी 3 बजे जाओगे कि अभी जाओगे घर? जय भीम, नमो बुद्धाय। जय बड़े भैया जी, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू जय भैया, थैंक यू। हाँ ठीक है, दो फिर कर देना। भास बोल देना बाल्टी भी भर देगा, किचन वाली बाल्टी भी भर देना बेटा। थैंक यू भैया, अजय भैया, थैंक यू। साढ़े 7 बजे मेरी क्लास में किचन वाली बाल्टी एक आध वो भरी हुई है, थोड़ी सी देख लेना। वो भरी होगी क्योंकि कल ही भरा था।
थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। रूम पे कब जाओगे?